Okay, so the thing is, yesterday I put a story and also I put a post of a person. Her name is Nilakshi. She is really an amazing human. We have been talking to each other from last month now, and I'm sure you're going to love her journey. She is basically from Lucknow, and she is going to let her journey know to all of us about how she started the pages on Instagram that you will come to know while she talks and tell about that. And I hope you guys will like the video today, and we are going to just have normal talks about how entrepreneurs work, what's their routine, and everything. And she's going to put a light on her businesses as well. So let's talk with her today. I'm going to join her right away, and you'll have a lot of fun, guys. So yes, let's start the intro. Hi. Hi, Zoe. Hi, how are you? Yeah. I'm great. I'm great. Thank you for having me. Welcome to the talk show. Thanks a lot. Thank you for having me. And first of all, happy World Entrepreneurs Day to you. You too, and I am so happy that you finally accepted my request on this. And on this very perfect day, with a perfect entrepreneur, we are going to have amazing talk, guys. We are going to have a lot of fun today. I hope I you're hope. ready, Nilakshi. I don't know. Is anybody ever ready about interviews? I I don't mean, think. I'm Okay, also still the thing figuring is, out, so I don't you know. also do that. So, how is that going for you today? Being not on that side who is interviewing people, but the guest. How are you feeling? Yeah. So I interview people, and then I thought that's a difficult task. But then being interviewed is also very difficult. I'm realizing it today because today you put me on It's the other not side. difficult, yeah. Yeah, okay, guys. Let's Nilakshi give a chance to talk about her first. Let's say her introduction first. Okay, introduction, Yeah. please. Yeah. So I had started businesses of Lucknow, and then eventually I started businesses of India. The idea behind both of these have been to talk about entrepreneurs and their journey. Because आप कभी भी सोचो like एक business के बारे में, it never happens कि you wake up in the morning and you decide कि आज मुझे ये business करना है. तो इट्स ऑलवेज लाइक कि आपको देयर इज अ होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, प्लानिंग लगता है, एंड नो वन जनरली टॉक्स अबाउट दैट. So with this, I wanted to Right. bring forward those efforts and highlight those people who are putting all of this effort in their work, and also talk about their brands. Like now it's become like a full-fledged marketing platform. So we Wow. talk about entrepreneurs, we interview them, we also talk about their brands, products, services, and it's going great. It's very interesting. Awesome. I would love to see that. Like, how does it happen? Like, all of my followers who doesn't know how this works. The thing is, all of my followers are like more basically doctors. तो ये फील्ड के बारे में थोड़ा सा उनको कम पता होगा, Okay. but today they will come to know. So Oh, it is something great. yeah, hope so. Okay, so can we know about your background? Like, what was your profession the earlier way? So, educational background was like I did my mass communication from Mhm. Symbiosis. It was in advertising. Then I did my MBA in marketing from Narsimunji. And after that, Okay. I was working with Tata, Trend Mhm. Hypermarket in Mumbai. So I was working with Mhm. them as a management trainee, and that was again in marketing. And after that, obviously, I always had in mind that I wanted to start a business of my own because I come from a business background. और मुझे Yeah. हमेशा ये चीज़ बहुत एक्साइट करती थी कि कोई बिजनेस करना है, कुछ अपना करना है, बट कभी पता नहीं था क्या करना है. कॉलेज में भी ये लगता था कुछ अपना करना है यार, बट क्या Right. करना है वो कभी नहीं पता था. सो ये भी मैंने जो स्टार्ट किया, इट वाज जस्ट लाइक कि आई वाज आउट. सो माय होम टाउन इज लखनऊ, एंड आई हैड बीन Mhm. आउट ऑफ लखनऊ फॉर अबाउट 6-7 years. तो पढ़ाई की वजह से एंड ऑल ऑफ दैट. So once I came back here, obviously lockdown brought all of us, I think most of us, back to our hometowns. Yeah. So when I came back here during lockdown,
तो ऐसे था कि I was like it all of this businesses of Lucknow was the first one to start, so that started out of my own Okay. curiosity कि I wanted to know what's happening in Lucknow and what new is coming up and everything, and I wanted to know the people behind it, so it started off Yeah. from there. And Yeah. So, I so had this never, thing made you to drop the job that you were doing earlier and focus towards this. yeah, That's and this was amazing. like I never imagined that this would turn into a business eventually, but I was doing Hmm. it because of my own interest in talking to people and knowing about them, knowing their story. Because I really believe in one thing that हम लोग हमेशा जब बात करते हैं इंस्पिरेशन की एंड बिजनेस की, तो हम वी लुक अप टू द वॉरेन बफेट्स ऑफ द वर्ल्ड, द टाटास ऑफ द वर्ल्ड. Those are great examples, but then the person next door also, even as basic as your kirana store guy, that Yeah, yeah, person yeah. also has a journey of his own. Like wo log suppose 20 years 30 years se they are running that shop, and there's got to Right. be a story behind it. कोई भी कुछ अपनी लाइफ में 20-30 साल के लिए अगर कर रहा है कंटिन्यूअसली, दे आर वेकिंग अप एवरी डे, दे आर रनिंग देयर बिजनेस एंड गोइंग टू वर्क, कमिंग बैक, सो देयर has got to be a story Yeah. behind it, and that is inspirational enough. So I just feel Yeah. people should also look around your friends, family, your next door neighbors, your people in your circle to draw inspiration. See, I totally resonate with this now. I started this show on the same basis. I was like कि भाई सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है. They are doing certain stuff, but they are Yeah, not counting them as their achievement or small success or something like that. They always say yeah, like यार ऐसा कुछ बड़ा achieve नहीं किया है. But you have reached somewhere कुछ करके. So that's why the hmm. show is also like it is the sign for that. It is the main Yeah, line I would say like yeah. कि let's know the unknown. Like known तो सब And I लोग जानते ही appreciate, है, right? Yeah. yeah, I You are doing appreciate the for same doing. thing now. Yeah. And I really like I'm doing in the big business segment, but you are doing, I Yeah. think, overall in every walk of life. So I really Yeah. appreciate what you're doing because going back to basics is very difficult. Like you can Yeah. start off things like you can have film stars talking about things, you can have chit chat, you can have like कुछ भी हंसी मजाक वाली चीजें, and people like that. Like internet में there's this whole fever going on of things going viral, and people just want कि Yeah. हंसी मजाक वाली चीजें, but then people who are actually trying to bring out the substance behind it and actually trying to create content which has some meaning to it, that's really Yeah. appreciable. Wow, amazing. Thank you so much. And also, like, I totally connect with you because हमारा बोलने का जो तरीका भी है and whatever the main focus that we are putting it is कि हर कोई important है, हर एक का काम important है. जो Yeah, बेसिकली सबको समझाया जाता है कि ये स्पेसिफिक बिजनेस को ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स इन योर हैंड्स. If you have yeah, an idea, every idea can be created as a business और उसको तुम कैसे भी मोनेटाइज कर सकते हो. The thing is you need to go in the process, stay in the yeah, process. That's yeah, what the main key of being an entrepreneur is. Consistently वो चीज करना होता है. So I yeah, could totally. just tell you like being a newbie in this entrepreneurship journey, you always need a mentor. ठीक है हम लोग ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई तो Yeah, मिल जाए यार. So you yeah. must have some experiences कि कोई ना कोई positive या कोई ना कोई negative मिला हो. So can you share something of that? So on the mentor front, I don't know. I've tried to like I'm also always pro कि I need some mentor in my life कि कोई एक guide कर दे आपको. Mhm. ऐसा नहीं होता. You find one person and that is your person for life. But what I feel Yeah, is you can draw inspiration and from everyday life also. आपके लाइफ में कुछ yeah, इंस्टेंसेस हो रहे हैं या देर आर पीपल यू लुक अप टू, आप छोटी छोटी चीजें उनसे पिकअप कर सकते हो. It doesn't have to hmm, be that one person is guiding you like a baby throughout life, but you hmm, need to draw inspiration. तो ऐसे होता है कि you in being in the industry, when I talk to people, because these are people who have a lot of years of experience. So when you talk to yeah, them, when you get to know about their journey, so a lot of things are there where you feel inspired and you feel like क्या yeah, मैं ये चीज imbibe कर सकती हूँ या क्या मैं ये चीज अपनी लाइफ में ला सकती हूँ. It can be as simple as hmm, daily routine, it can be as simple as mental health, it can be as simple as कि yeah, आप अपना customers को कैसे treat करते हो. तो
things like that. Right. And so I have met a few people who have given me very good advice and very good practices that they follow in their life. So some of them being कि Mm-hmm. uh, अगर आप every day when you wake up you decide two things that you're going to do, that Yeah. two things in the whole day apart from your work that makes you happy, something like that, Right. very basic, but if you follow it, it is like कि Very every day. important. Yeah, yeah. तो So नहीं, दिस इज क्लीशे। वैसे मुझे भी कभी ऐसे जर्नी के टाइम पे ऐसा होता था कि पीपल वुड से लाइक, सी एंटरप्रेन्योरशिप इतना इजी नहीं है यार, तुमको 24 घंटा काम करना पड़ता है, तुमको ब्रेन को समझाना पड़ता है कि ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्ट, कि इस पार्ट में क्या करना चाहिए और उस पार्ट में क्या करना चाहिए, लाइक बेसिकली कीपिंग योर ब्रेन ऑल द टाइम बिजी दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू मेक योर ब्रेन लिटिल फ्री, कि भाई ऐसी चीज मैं खुद करूँ जिससे मेरे को वो बूस्ट हो जाए और मैं जब आइडिया पे काम करूँ तो वो अच्छे से हो। सो हाँ, रेस्ट तो इज दैट वर्क्स इम्पोर्टेंट आउट एट वेल। सम पॉइंट। अगर आप ऐसी कुछ या टाइम अपने लिए निकालते हो, योर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। तो मे बी या राइट। अदरवाइज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू आर अंडर प्रेशर, जो चीज के लिए आपको 2 घंटा लगेगा, इफ यू आर इन अ फ्रेश माइंड एंड आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, प्रॉब्ली यू विल डू इट इन हाफ एन या आवर, 1 आवर। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं या मेरे साथ। मतलब बीइंग राइट। एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीकेंड का कोई मतलब नहीं होता है, वीकडे वीकेंड सब सेम है। एंड एवरी डे। या सो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास हाँ सैटरडे संडे मेरा ऑफ है, मैं किसी का फोन कॉल नहीं उठाऊंगी, मैं कोई चीज अगर नोटेड डाउन है वो कंप्लीट नहीं करूंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो तो कुछ राइट। होता नहीं है। बाकी ये है कि व्हेन यू आर वर्किंग यू शुड फील लाइक कि whatever you're doing keeps you मतलब keeps you going. Like every day राइट। when I wake up also I have a list in mind, अच्छा आज ये करना है, and I'm excited about it. It's not like कि I do it क्योंकि मुझे कोई बोल रहा है या फिर it is required or someone is I have a deadline like for someone, या but it naturally happens because I like what I'm doing. एंड द अदर पार्ट लाइक यू आस्क्ड मी कि इंडस्ट्री में कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, तो ये भी होता है कई बार कि आप बहुत लोगों से बात करते हो, मतलब आई हैव कम टू रियलाइज दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल कि आप जब किसी चीज को ओके। पहली बार करते हो, यू आर न्यू इन द फील्ड और यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देर आर अ या लॉट ऑफ पीपल यू टॉक टू एंड एवरी वन गिव्स यू एडवाइस, क्योंकि मतलब हर किसी के पास एडवाइस होती है आपको देने के लिए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई चीज आपके लिए वर्कआउट करेगी, कोई चीज आपके लिए नहीं वर्कआउट करेगी। एंड जब वो एडवाइस कोई ऐसे लोगों से आती है जो 20 साल के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, 30 साल के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, दे हैव अ गुड बिजनेस ऑफ देयर ओन एंड दे आर एट सम पोजीशन जहां आपको लगने लगता है कि अच्छा इफ दे आर गिविंग मी दिस एडवाइस तो एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, या फिर राइट। मैंने जो अभी तक किया है वो सही नहीं है क्या, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी क्या, इस तरह की भी डाउट्स आते हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ है कि कोई एडवाइस कितनी अच्छी दे ले, आपके लिए वो अच्छी है कि नहीं, यू नीड टू डिसाइड। तो राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस चीज से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। यू आर समवन हु इज एक्सपेरिमेंटिंग, यू आर समवन हु इज डूइंग थिंग्स एंड एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट। यू नो कि या उसमें माइन्यूट प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, या फिर अगर कोई आप नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहे हो उसमें क्या क्या आपको पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, तो यू डू इट बिकॉज यू आर फीलिंग इट राइट। किसी और की राइट। एडवाइस आप उस एक्सटेंड तक लो टिल द टाइम इट्स बेनिफिटिंग यू। अगर आपको वो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है या कुछ है, कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, बिकॉज एडवाइस ऑब्वियसली हो सकता है वो पर्सन ज्यादा आपसे लॉन्ग टर्म सोच पा रहा हो, आप नहीं सोच पा रहे हो। कीप इट एट द बैक ऑफ या योर माइंड, हैव इट इन योर थॉट्स, बट उसको आप अपने मोटिवेशन को या एनर्जी लेवल को अफेक्ट मत करने दो। बट इट इजीली अफेक्ट्स यार, वी आर न्यूबीज। अब तुमको तो या पता ही है कि अभी इट टुक यू लिटिल बिट टाइम टू रीच हियर एंड टू से दिस स्टफ। अगर ये या नहीं होता तो व्हाट यू वुड हैव सेड, लाइक इट्स अ mere confusion like everywhere तो wherever you go, आई क्योंकि टेल यू, yeah. yeah, so I'll tell you the first time it happened to me when I Okay. was
I used to look up to someone a lot in the industry कि Yeah, यार इन्होंने तो अपना बहुत ही फाड़ काम किया है एंड मैं इनसे बात करती हूँ एंड मुझे मतलब आई वुड रियली बी इंस्पायर्ड कि मैं क्या करूँ अभी आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा yeah, प्रॉब्ली ही विल बी एबल टू गाइड मी देन आई yeah. टॉक टू दैट पर्सन ऑब्वियसली आप एक बार में इट्स वेरी नेचुरल आई थिंक एज ह्यूमंस कई लोगों का Mhm. शायद थोड़ी ज्यादा पावर्स है हमसे बट नॉर्मली कोई आपको Mhm. क्रिटिसाइज कर पहली बार है या सो जब Yeah, आप yeah. पहली बार कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो बुरा जब लगता है देन इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप गोइंग व्हेन यू आर इन द सिचुएशन एंड आप किसी से बात कर रहे हो और आपको बुरा लग रहा है और आप फिर भी सुनते जा रहे हो कि अच्छा नहीं ठीक है कहीं मुझे एडवाइस मिल रही है किसी से एंड आई मस्ट कीप गोइंग और आई मस्ट लिसन टू देम और व्हाटएवर बट ठीक Yeah. है आई टुक इट दैट वे कि आई केप्ट लिसनिंग बिकॉज आई थॉट ठीक है मतलब मे बी आई एम न्यू आई शुड लिसन टू दिस पर्सन एंड होगा लाइक मेरा ही फायदा है शायद बट देन व्हेन आई केम बैक एंड आई रिकलेक्टेड एवरीथिंग दैट आई हैड बीन टोल्ड Mhm. आई फेल्ट वेरी Yeah. नेगेटिव एंड आई डिड नॉट लाइक फीलिंग दैट वे तो हाउएवर वेग मतलब जो लोग Yeah. इस सिचुएशन में गुजर चुके हैं सिचुएशन से दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बट बहुत उस समय बुरा लगता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू कम आउट ऑफ इट कि नहीं इन्होंने बोला होगा ऐसा इनकी एडवाइस होगी ठीक है टेकन बट मुझे जो करना है मैं उसको किस तरह से एक्चुअली कर सकती हूँ प्रॉब्ली इसमें से थोड़ा सा मैं कैसे उनकी एडवाइस भी इंक्लूड करूँ एंड बट मैं अपने तरीके से कैसे चीजें करती रहूँ which motivates Yeah, me. we are looking for advices, obviously, but हमको ना ways भी चाहिए. A guiding path where we could say like हाँ मैं इस तरीके से अगर करूंगी तो शायद मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी जहां मैंने अपने आप को देखा था 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के प्लान के हिसाब से. बट अगर हमने देखा है कि 6 मंथ्स के हिसाब से इतना होना है और दूसरा पाथ हमने पकड़ लिया और उसमें हम लोग बीच में इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो हमारा 1 महीना या 15 डेज बढ़ जाते हैं आगे तो हमारा टारगेट जो होता है वो भी कुछ दिन आगे चले जाता है एंड दैट फीलिंग इज लाइक थोड़ा सा टफ. ठीक है एनर्जी लगता है लेकिन जो थॉट प्रोसेस है ना उसमें भी बहुत हैम्पर हो जाता है सब कुछ हमारा सिस्टम ही बदल जाता है. So the thing is, when you get up and you said like you note down 2 things that you are going to do all day. कभी कभी वो भी नहीं आ पाता है क्योंकि यू आर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एडवाइस और मे बी दैट पिक्चर जो उन्होंने हमको दिखाया है हम अभी कंफ्यूज हो गए हमारे पिक्चर को लेके अब वो मिक्सअप हो गया है और अभी But हमको समझ नहीं आ रहा है. but I think it's all part of the game. जब आपके पास एक planning It होती is है, needed basically. you are serious about your business, you figure out ways. And best होता Yeah. है, you have deadlines, you have timelines in mind. आपको Mhm. पता है आप क्या कर रहे हो. It is not like a hobby that you're doing. This is proper Yeah, business. yeah. आपको financials के बारे में भी सोचना है. You have to think about timelines कि नहीं इतने टाइम में मुझे ये अचीव करना है. So Right. that is part and parcel of life कि there will be ups and downs. कभी कभी Yeah. बहुत जब अच्छा लगता है लाइक बहुत अच्छी चीजें हो रही होती है लाइफ में तो यू कैन कंप्लीट 2 days का वर्क इन 1 day बट देन Yeah, yeah. मैनेजिंग एवरीथिंग एंड कीप ऑन गोइंग दैट इज द गोल दैट शुड बी द गोल Right. एंड आपके जो टाइमलाइंस हैं आपके जो फिगर्स हैं या यू हैव समथिंग इन माइंड दैट दिस इज द टारगेट दैट आई हैव टू मीट keep up with Yeah. that keep reminding yourself the bigger picture the longer the dream that you have the end goal basically and then these things like at the end of it will feel very small so Yeah, looking the back now plus like point of this stuff is like कि जब तक बुरा नहीं होगा गलत नहीं होगा तब तक तुमको समझेगा ही नहीं कि सही और परफेक्ट क्या है तुम्हारे लिए. सो बेसिकली इट शुड हैपन एंड इट इज नॉर्मल. अगर गाइस तुम लोग कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो दिमाग में चीज ये रख लो कि बहुत लोग ऐसे आएंगे जो शायद तुमको परफेक्ट पाथ दिखाए या फिर कोई तुमको डाइवर्ट करे तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस तो इसमें तुमको ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है. and one thing is like एंजॉय in दैट. marketing and in marketing industry specifically so like one of my mentors really gave me some good advice कि marketing field में ना everyone has an opinion so Yeah. that is something which has always stuck with me कि
Yeah. हाँ मतलब ऐसे होता है मार्केटिंग फील्ड में आप कोई भी किस द क्लाइंट दैट यू हैव दे हैव देयर ओन ओपिनियन द क्रिएटिव पीपल यू आर वर्किंग विद दे विल हैव देयर ओपिनियन इसको ऐसे करते हैं इसको ऐसे शूट करते हैं इवन आई हैव Yeah. फेस्ड instances where there's a shoot going on like what I do we create ads for different clients तो Mm-hmm. उसमें क्या होता है कि अब वी आर डूइंग द शूट वहां पे वर्क करने वाला स्टाफ या जो एक्टर है दे विल ऑल्सो हैव एन ओपिनियन कि इस एंगल से शूट करवाइए इस एंगल से करवाइए ये लाइटिंग कर देते हैं यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं आई एम लाइक Okay. मतलब मार्केटिंग में you have to have so much patience क्योंकि whatever you are thinking the other person has two more creative ideas to that and everyone Yeah, yeah. feels कि मैं ज्यादा creative हूँ या ये चीज करेंगे तो ये Mhm. ज्यादा अच्छा बनेगा but then Yeah. overall you need to have your head strong कि this is what I've thought and this is how I'm going to go ahead तो Also, do इसमें what you have communication का भी बहुत अच्छा part आ जाता है. Like the way you talk and tell them, okay, this is not the thing I was thinking to do, but I was thinking yeah to do in this way. So let's do it this way. yeah So yeah negative भी sometimes face ना it's करना पड़े. sometimes it's very difficult like when you are dealing with clients obviously you can't be rude to them and you Yeah. have to put across your point because you can think of two steps ahead of them probably वो उतना Yeah. ज्यादा नहीं सोच पा रहे उस बारे में and you are Right. feeling कि हाँ इस तरह से हुआ तो इसमें this can go wrong or whatever तो it's very important कि आप जैसे client के साथ या whoever you're dealing with even your team and the client alike you have to be very polite, keeping your calm, and then you Yeah. need to be polite to them so that no one is offended, and then the work is also done. So for any Yeah. business owner, I feel ये चीजें बहुत ही important होती हैं that you need to keep a check on yourself, the way you conduct Right. yourself, the way you talk to Mhm. people, Mhm. because it's not even fair like anyhow like you are a doctor like even if you talk to your patients in a rude manner Yeah. then It's how do not you going to work think at all. Not going to work. The patient will never think of coming to my clinic then, ever. exactly exactly so that's Right. what Okay, so I next question think comes here is like if there are people who have ideas, who have thought to start something, तो उनके लिए initial point क्या होगा? Like how to initiate that process and basically, can you tell it by your experience? How did you initiate your business? sorry your internet was gone I think in the middle Yeah. could you There is some repeat problem here. Okay, so I was asking you that how to actually start or how to initiate the process of the business. Like, can you tell it under your experience? Like, what was your experience in that way? So, so for a business, see this what I'm doing right now. I never thought I will take it up as a business, but then what example I can give you is, so before this also I had a business, and I have no shame in saying that it did not work out. So it was a startup, and there was a huge investment also in that. It was kind of Okay. like hotel hospitality related business. तो Okay. उसमें how I started that one because that was like a well thought out business. उसमें proper planning थी, Okay. proper budgeting थी, a lot of things were at stake, time, money, everything Mm-hmm. was at stake. And Yeah. first of all तो ये है that you need to discover something that you're passionate about. क्योंकि this Yeah. is something you will have to do day in and day out. You like हम लोग बहुत सारे लोग हैं like even in my job when I was there would be times when you would feel कि now my work is done I can chill or I'm out of Mm-hmm. office I'm not even going to open my laptop or not going to see my emails but when you are Mm-hmm. running your own business you can't be that way you can't say कि Right. अगर 11 o'clock पे someone is messaging you or some work needs to be done you can't say no because it is your business and you are responsible for it. So, whatever you do, first of all, something which you can, like you have to imagine ki if for 1 year you have to do it day in and day out, will you be able to do it? So, I think that is one. Yeah. The other is obviously plan Mm-hmm. out your financials because financial Yeah. backing बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है and I think एक ये बहुत ही general like बहुत ही
common saying है in a business that you should plan out your Hmm. financials, that you have a cover up for 1 year, like you have a backing for 1 year, because first year of Okay. business is always like no one is expected to make profit in the first year. Yeah, yeah, yeah. तो Yeah, correct. तो उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, यू शुड बी एबल टू बेयर इट. अगर कुछ ऐसा है जिसमें Yeah. इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, लाइक फॉर मी इन दिस बिजनेस, इनिशियली देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट. I was doing this on Hmm. my own, and I used to do the writing, I used to do the content, I used to do the designing, approaching people, talking to them, all of that. There were Yeah. minimal costs involved, but then on Hmm. the whole, like for 4 months, I think 4 or 5 months, there was no cost at all. So then Okay. you build from there. Then you figure out ways ki how much do I require? Do I put in my savings? And Yeah. how do I plan out the return? So I think this is Right, there. right. And then obviously a Okay, so huge part is basically team. a roadmap kind of a thing you should have. Like, अगर कहीं पहुंचना है तो उसके points होने चाहिए. Like, today I reached here, then the next day this plan, third day ऐसा plan किया. So basically it's a roadmap towards the success. And then Yeah. there is a process Not a जो काफी अलग होता है entirely. Yeah, not a day-to-day plan, but like एक long term goal तो होना चाहिए कि what is the, एक जैसे Yeah. building होती है अगर, तो there has to be a Mm-hmm. foundation that this is what I'm going to Mm-hmm. do. A lot of businesses Yeah. should like get should have their like statement of purpose कि whatever you do Yeah. is going to be around this. तो Yeah. आपके पास भी एक चेक होता है कि whatever I'm expanding into, या if I'm trying something new, is it in line with my statement of purpose. Mm-hmm. तो Mm-hmm. ये चीजें हैं कि आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. सारी प्लानिंग तो कभी नहीं हो पाती है, मतलब एज यू गो, एज यू ट्राई थिंग्स, यू फेल, यू हिट एंड ट्रायल चलता रहता है. मेरा भी बहुत हिट Yeah. एंड ट्रायल चल रहा है. आई एम नॉट समवन जो ऐसा, आई एम नॉट एट ऑल समवन जिसको एक फुल फ्लेजेड फॉर्मूला पता है, बट ये जरूर पता चल जाता है व्हेन यू ट्राई एंड यू फेल, यू डेफिनेटली गेट टू Yeah. नो कि व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट. तो देन Right, right. along the way you need to make adjustments कि ये नहीं चल रहा है, probably I should try it in this way. Then you Yeah. again try, कुछ चीजें success हो जाती है, कुछ चीजें नहीं होती हैं. That's how you keep going. Amazing. Guys, I hope this was really helpful for you कि इनिशिएट कैसे करना है, क्योंकि ये सवाल हमेशा आता है कि एक तो पैशन कैसे ढूंढना है और अगर मिल जाता है तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना है. सो बेसिकली यू गॉट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट एंड ऑल्सो द पैशन. द थिंग इज वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड उसको बस स्टार्ट करने का सोचो, एक प्लान बना लो, कुछ एक लॉन्ग टर्म गोल बना लो और फिर उसको पाने के लिए जो भी चीजें आप कर रहे हो वो बेसिकली जॉट डाउन अपने आप हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या है वो भी पता चल जाएगी. इजी वे टू से लाइक दिस Yeah, yeah. कि कुछ भी कर And सकते हो one यार, more thing अभी I would एवरीथिंग like इज to add. पॉसिबल. या. Yeah. या. So one more thing, like when you're looking at what you're passionate about, तो वो कब, that's not an easy process. Starting point कभी भी easy नहीं होता है. तो I think for me back in college also, like this is 2013, मुझे हमेशा से ओके. मन था कि मैं कुछ अपना करूं. एंड कॉलेज के साथ भी हमें बहुत ऐसे लगता है ना कि लाइक while the college is going on, let's try something, मे बी कॉलेज के या. एंड तक एक कुछ फुल फ्लेजेड बिजनेस हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट. तो या. बैक इन 2013, मतलब तब से मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कुछ करने का मन है, बट ऑलवेज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इट कि क्या करना है. तो इमेजिन राइट. फ्रॉम देयर, एंड this I started in 2020, so it's not an easy journey. 7 साल या. और लगे हैं समझने में कि मुझे क्या पसंद है और मेरी कैपेबिलिटीज से मैं क्या कर सकती हूँ. एंड नॉट राइट. इवन लाइक कि ये 7 साल से ये चीज सोच रही हूँ मैं एंड फाइनली आई एम डूइंग इट इन 2020. इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज अ मोमेंट लाइक कि एकदम से चमका कि ये करते हैं. तो Yeah, that also, that is like तो something different. या जिसके बारे में सो तुम सोच भी नहीं रहे हो तो sometimes it just comes from back of your mind कहाँ से, या but yeah, that creates an idea to do something. Yeah, and the different things that you observe, obviously experiences are very important. Yeah. अभी तो like we have internet, we have social media, सब कुछ हमारे fingertips पे है कि we are seeing so many new things happening. तो people are so Yeah. well aware, if people use it in a good way, तो हर चीज में you can feel कि अच्छा ऐसे already हो रहा है. If I do it, Mm-hmm. how can I do it differently? तो Yeah, yeah. it's always like that. If you resonate with something, तो आपको वो चीज like you should go ahead with it.
अमेजिंग, सच अ हेल्पफुल पॉइंट यार, लाइक गाइस सुन रहे हो क्या? इतना I hope. इजी और एकदम फ्री में मिल रहा है, तुम लोगों को ले लो. I hope it's helping. I don't ओके, know. सो बेसिकली बिजनेस में काफी सारे ऑप्शंस है, एंड योर इज लाइक टोटली टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर्स एंड एवरीथिंग. तो इसमें भी टॉक्स में भी बहुत सारे जैसे पॉइंट्स आते हैं. जैसे मैं ओवरऑल कर रही हूँ, तुम एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस कर रहे हो, तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गया कि एक फील्ड में हम लोग दो तीन चीजें कर सकते हैं. So can you give me more examples, more specifically for women? And I feel it's so empowering today. Like World Entrepreneurs Day के time पे हम दो women's बात कर रहे हैं. तो I would love Yeah. to tell all of the women's out there or girls out there who are thinking to have something in their life of their own. तो ऐसे options, can you just tell them like थोड़ा सा points में कि okay ये कर सकते हैं, and being at home. Definitely. Being at home. So, definitely, like for anyone, I think the biggest learning that lockdown has taught us कि you Yeah, don't really have to be in the physical space to do things. काफी सारी yeah, ऐसी चीजें हैं where online obviously बहुत चीजें possible है. If you have a team, you can coordinate with them online. बहुत right, obviously it's much easier when you're there. सामने बात करना, सामने coordinate करना is much easier. But then yeah, a lot of avenues on the online space, talk shows, podcasts, these online selling, a lot of business is happening through Instagram. Then I yeah, see around me, like the people I talk to, a lot of women have taken up their business ahead. So यहाँ लखनऊ में भी okay, like a lot of things, a lot of businesses are there जो generation से चले आ रहे हैं, like two three generation old businesses हैं. Now the younger wow, generation, men women alike, they are getting into their business and they are taking it online, or they are bringing new wow, changes to the business according to their generation or according to the taste of our generation, according to the yeah, futuristic avenues that are there. तो उसके अकॉर्डिंग वो yeah, अपने बिजनेस में इनोवेशन ला रहे हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं. देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ इट, बी इट गर्ल बी इट अ बॉय. कई लोग ऐसे okay, हैं जो अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे वो बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है उनका, दे वर इनटू okay, जॉब्स, but now they okay, have some idea, or they are willing to get into business या startups. तो वो okay, अपना जो भी करना चाहते हैं, they are trying to make it possible here. And amazing. मतलब अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, देयर इज अ होल प्लानिंग, दे हैव अ गोल इन माइंड कि क्या करना है उनको, किस तरह से करना है, व्हाट न्यू थिंग्स दे वांट टू ब्रिंग टू द सिटी, जो सिटी में ऑलरेडी मे बी ग्रोइंग अप उन्होंने उनको कभी नहीं मिली, तो दे वांट टू ब्रिंग दोज थिंग्स टू द सिटी. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं. ओके, सो बेसिकली पॉइंट्स बहुत है जिसमें हम लोग उनको मेंशन करा सकते हैं कि अगर तुमको क्लोथिंग का भी स्टार्ट करना है, ब्रांड भी अगर स्टार्ट करना है, तो यू कैन डू इट लाइक घर से भी. बेसिकली या साइट के लिए काम करना होता है, एंड वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज फैब्रिक्स एंड वर्क्स, वो तुमको फिजिकली जाके चेक करना पड़ता है, बट ऑल ऑफ योर बिजनेस कैन बी ऑनलाइन. या सो दिस इज लाइक, इट कैन फॉर बी. एग्जाम्पल ऐसे कुछ कर सकते हो तुम. और दूसरी चीज अगर करना है कि अगर कोलैबोरेशन के थ्रू अगर तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो देर इज वन बिजनेस जो काफी सालों से चल रहा है, तुमको तुम्हारा आइडिया और कॉन्सेप्ट उनके साथ कोलैब करना है, तो यू जस्ट हैव टू हैव अ वर्ड विद देम, एंड डायरेक्टली या आप वो चीज को वापस ऑनलाइन डाल सकते हो. तो like a वुमेन्स very के लिए small ये very हो small जाएगा. example कि हम्म. चिकनकारी, if you know, लखनऊ का बहुत फेमस है. या, now यस, चिकनकारी में there are so many things, like बहुत सारी टेक्निकलिटी है, but a very small thing, like there are businesses I've talked to जिन्होंने लॉकडाउन टाइम पे चिकनकारी मास्क बनाना स्टार्ट कर दिए. Now this is वाओ, something completely new. They या, started making stoles and all because we were wrapping around mouth के around we were wrapping या, stoles also. तो ये सब या, चीजें उन्होंने start कर दी. Not the traditional like लहंगा कुर्ती all of that. So this is या, like very small example, but this is कि आप traditional business में भी नया डूएबल. क्या कर सकते हो. And there are या, women who राइट. are sitting at home, या फिर they are working on their skills. home decor है या फिर painting, anything. या, A lot of या, सो देयर आर avenues. लॉट ऑफ आइडियाज कि ऐसे तुम खुद को लिमिट नहीं रख सकते हो कि हाँ ये बाहर ही करना पड़ेगा, या फिर लोकेशन स्पेसिफिक होता है, या फिर घूम घूम के ही होता है. तो बेसिकली यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक यू हैव इंटरनेट, इट्स रियली पावरफुल गाइस. यूज करो. Yeah. या, You सो won't व्हाट believe, गोल्स like आर यू. talking about. So we are in या, the time where metaverse and all is happening. So there are या, brands
Like there are मतलब not even like बहुत बड़े designers, medium sized designers who are having online fashion shows. So Yeah, imagine that's something, something yeah, imagine something like a awesome. fashion show happening online, happening in the metaverse also. Yeah, Like they have avatars created and they have like all these designs and all, and it is happening online. So yeah, yeah. People are there's no, enjoying that. Like there are filters also over there. Like normally people can also wear that kind of design on yeah, Instagram yeah, filter or anywhere, and they feel like, okay, this really suits me or something. That's really fun. yeah, Something new. exactly, Okay, so I exactly, would love to know, you yeah. are running these two businesses, like amazing page of Lucknow and India. So, more specifically, all over India, you are thinking about, okay? Like it is really a big thing. So that is like one of the goals, like covering all of these stories. But what goals are actually you're working towards achieving, and what do you think? What is a success for an entrepreneur? Sorry, you said what goals are you thinking Yeah, of what achieving, goals and are then you working towards achieving? And what is your definition of success? What defines like entrepreneur success is? so Uh, goals that I'm working towards, definitely, I want more people to get inspired. I Hmm. want more people to be able to connect with these stories because Yeah. all of us we want to do something in life, like be it in the Hmm. career segment, personal life, and all of that. But Right. what we need is motivation. That आप किसी और Right. को करते हुए देखते हो, you it's not Hmm. obviously necessary कि आप खुद गलतियां करो and you learn from that. You can learn from others' mistakes also, or you can learn from others' Right. success also. तो when you get Right. to hear about so many stories, कई बार तो एक relatable factor आता है कि ओ मैंने भी ये experience किया, अच्छा किसी और ने भी किया है, and they Hmm. came out of it. तो वो एक अलग Yeah. motivation होता है. That's what I majorly want to do. Obviously benefit the businesses, क्योंकि एक ये है कि बहुत ज्यादा आप किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो, कोई उसका आप यूज करते हो प्रोडक्ट का या सर्विस का, बट देन व्हाट अबाउट Hmm. द थिंग्स एंड द एफर्ट्स दैट आर बीइंग टेकन बिहाइंड दैट टू एक्चुअली मेक इट पॉसिबल, Right. टू एक्चुअली Hmm. make all of that happen. So these are things like I really want people to get to know about, like maybe behind the scenes wali cheezein, and to Right. obviously have a guide or a mentor जो आपको, like wherever you are stuck, someone can guide Yeah. you maybe through their story or maybe directly so you can get some guidance. So that is the goal. A successful entrepreneur, I think सबकी definition different होती है. There is no Hmm. one definition, but I think for What's one, yours? ऐसे ऐसे on a daily basis I feel जैसे कभी वो moments होते हैं ना, मतलब अगर जिंदगी में थोड़े थोड़े ऐसे moments होते रहे कि where you feel अच्छा कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ Yeah. impactful कर रहे हैं, people are benefiting For out me of it, also. तो I'm That happy. is success for me. राइट Yeah, कुछ आई डू दैट मैं खुद को शाबाशी दे देती हूँ लाइक जो एटलीस्ट तू कुछ कर रही है और ऐसा कर रही है कि वो आगे जाके इन फ्यूचर काफी बड़ा होने वाला है एंड विद दैट थॉट थोड़ा सा और पावर हो जाता है कि चलो ठीक है लेट्स कीप योरसेल्फ गोइंग इनटू इट और अच्छे से कर सकते हैं दैट्स अमेजिंग yeah, Okay, yeah. so now we have come to the end part of this session, this beautiful session. मुझे नहीं लगता है कि हमको छोड़ के जाना चाहिए. This is really amazing going. I But hope people still, are benefiting, but obviously the way you said like right now कि लोगों को inspiration मिलनी चाहिए through other people's stories. That's what we are doing. तो obviously फायदा बहुत है. And the main thing is, I would love to ask you a powerful message that you would be able to give to the viewers and also to this young entrepreneurs. powerful message. Yeah. So I think something powerful would be that whatever comes to your mind, like whatever you really connect with, try to do Mm-hmm. something in that aspect. Like किसी चीज से आप मतलब अभी भी मैं किसी को बताती हूँ, like 2 days back also this happened that I was telling someone the Okay. idea behind my business and I was like कि आपका I come from a business background, so I have seen कि Yeah. कितना struggle होता है, and जो Mm-hmm. चीजें
मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था that this will become a marketing platform and all of that, but the basic still remains that sharing those stories or sharing things which people usually don't get to know about. तो Yeah, वो चीज से अगर हर बार बताते टाइम मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई एम रियली एबल टू रेजोनेट विद. तो wow. इफ देयर इज समथिंग इन दैट एस्पेक्ट, कोई भी हो, मतलब नॉट इवन करियर ओरिएंटेड, लाइक आपको कुछ लगता है यू कैन बी ऑफ हेल्प समवेयर, इफ यू रियली Yeah. रेजोनेट विद इट, डू समथिंग अबाउट इट. लाइक डोंट जस्ट बी लाइक कि हाँ मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए, या मुझे इस एनजीओ के लिए कुछ करना चाहिए, या मुझे इस करियर में या प्रोफेशन में कुछ करना चाहिए. टेक दैट फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आप धीमे धीमे यूल सेल्फ लाइक फिगर आउट कि क्या उसमें कर सकते हो. एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. Awesome. मतलब जो जो तुमको ठीक लग रहा है पहले उधर जाके देखो, फिर बाद में अगर नहीं ठीक लग रहा है तो रास्ता बदल दो. वहां कहीं अगर या तुमको फील हो रहा है कि दिस इज मैचिंग माय फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है स्टार्ट करो एंड इवेंचुअली यू विल या रीच समवेयर इन योर लाइफ. इट्स लाइक फेलियर या तो आएंगे, अनटिल एंड अनलेस यू विल सी फेलियर्स यू विल नॉट कम टू नो व्हाट्स योर सक्सेस. और उसका डेफिनेशन भी तुमको नहीं इट्स पता लाइक चलेगा. एटलीस्ट इट्स लाइक एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. मतलब इफ या सिर्फ सोचते रहने से कोई चीज नहीं होने वाली है. सो गिव इट अ या ट्राई. ऑब्वियसली. एंड वन अदर थिंग विच आई रियली फॉलो इज कि बात करने से ही बात बनती है. तो दिस दैट इज द तो टाइटल टुडे. कैन यू रिपीट इट प्लीज? बात बात करने करने से से ही. ही बात बनती है. या सो दिस तो लाइक इन जनरल लाइफ Awesome, सिचुएशंस में भी yeah. आई फॉलो कि जब तक मतलब किसी से बात नहीं, Yeah. कुछ तुम्हें लाइन में आगे जाना है. कभी किसी से एयरपोर्ट पे ऐसे हुआ होगा ना कि फ्लाइट छूट रही है और तुम लाइन में Mhm. आगे जाना चाहते हो बोर्डिंग पास लेने के लिए. अब तुम आगे वाले लोगों से बात ही नहीं करोगे कि मेरी फ्लाइट छूट रही है, तो कोई आके तो नहीं बोलेगा ना कि भाई मेरे आगे आ जाओ, It तुम्हारी happened with फ्लाइट छूट me. This example जाएगी. that you're talking, I actually yelled at one man. It's like, भैया सरको ना यार, मुझे जल्दी जाना है. अगर वो मैं नहीं बोलती तो मुझे वहीं खड़े रहना पड़ता सब सामान के साथ. इट्स एग्जैक्टली. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर तुम कोई डिलेमा में हो या फिर कोई कंफ्यूजन में हो, तुम्हें लग रहा है कि उस फील्ड के बारे में कोई समझ सकता है, तो सीधा खुला बात करो. पूछो. अगर वो इरिटेट भी होते हैं तो एग्जैक्टली. ठीक है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, लेकिन फिर किसी और को पकड़ के फिर कुछ ना कुछ पूछो, लेकिन बात करो. बात उनके करो माइंड पे एंड भी देन. जाएगा कि व्हाट यू आर थिंकिंग हाँ. ऑफ डूइंग. एंड जितने लोगों से आप बात करोगे आपको नई चीज पता चलती है हमेशा, तो इट ओपन्स अप योर माइंड. एवरी टाइम. और या. कितनी बार ऐसे होता है कि आपने सोच लिया अपने मन में, नहीं यार ये इससे कैसे बात करें, या फिर इससे बात करके कोई फायदा नहीं है. बात करो तो या. तब तो पता चलेगा. मे बी देयर होने के समथिंग पहले लाइक. ही सब. या लाइक मे बी देयर समथिंग कि like for us also, imagine like we never या. knew each या. other, but you took the या. initiative, you put your point forward, and it was amazing. Like I really, like before also या. when we've talked, I've really loved talking to you. So now Ah, we're that here. first call was like, dude, she is me, but she is living somewhere else. That's it. Oh my god. It's like, okay, ऐसे बहुत Yeah. सारे लोग हैं जो इन situations से जाते हैं, बात भी करते हैं, they feel proud of whatever they are doing. Sometimes we get Yeah. stuck somewhere, but this is really powerful कि until and unless you talk, तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब blind हो जाएगा at some point, क्योंकि Yeah. communication ही नहीं है कुछ भी. तो बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा है तो हम ये शो कर पा रहे हैं. अगर हम वो भी नहीं Exactly. कर पाते तो हम कुछ और कर रहे होते आज. बट ये भी है कई बार जब हम सोचते हैं कि नहीं मैं किसी को बोलूंगी नहीं है, खुद ही आई फिगर आउट, तो वो चीज या. छोटी सी होती है बट दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती है दैट या. योर होल एनर्जी गोज फॉर अ टॉस. आप जो भी अगर कुछ कर भी सकते थे तो वो भी बेकार हो जाता है. सब तो सब सब डेफिनेटली. मतलब सब एक डेफिनेटली. थॉट से दूर है हम लोग. सो ओवर डेफिनेटली थिंकिंग ना व्हाटएवर. करो बस. या. So whatever you have in mind, you whoever can help you, go talk to them, figure out. Yeah. Just do Yeah, it. obviously. Like keep yourself going. Awesome. Yeah. Okay, Yeah. तो अभी एंड पार्ट आ जाता है. तो द मोस्ट फेवरेट थिंग आई आस्क इज कि मुझे ना फीडबैक चाहिए. अगर Oh, मुझे तुम लोग फीडबैक दोगे तो मेरा शो और अच्छा बनेगा. तो definitely. प्लीज दिलाक्सी गिव मी अ फीडबैक ऑन माय शो द लेजेंड टॉक्स. Feedback is, I feel you're doing some awesome work.
because making people talk, having a lively conversation, and जैसे you have kept the goal कि एक बहुत ही like बिंदास conversation चाहिए, ऐसा कुछ points नहीं चाहिए, Yeah. but just the legit talk Chit basically. chat. Speak your, yeah, chit chat and speak your heart out. So obviously it's very Yeah. nice. The Awesome. thing is ki just keep adding more and more people in this, like from Yeah. different professions, from different fields, because everyone has a very different experience. And वही है Yeah. जो मैं फॉलो करती हूँ कि हर किसी से सीख सकते हैं, चाहे वो That's बच्चा हो, what I'm चाहे वो saying, बड़ा that हो, चाहे कोई हो. it's you are me, but you are living in Lucknow. Same goals, almost same thinking, but जो मेन है ना कि कुछ करना है, रूटीन अलग है, चीजें अलग है, स्ट्रैटेजीज अलग है, बट मेन थिंग इज Yeah, डूइंग समथिंग फॉर yeah, पीपल टू लेट देम इंस्पायर yeah, टू लेट देयर जर्नीज नो एवरीवेयर कि कॉमन पर्सन हमारे इंडिया को कहीं ना कहीं लेके जा रहा है. नोन yeah, पीपल आर ऑब्वियसली देयर, उन्होंने कुछ किया है इसलिए वो नोन है. But now my audience will also come to know that there is a person named Nilakshi. She is doing such business जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को वैल्यू मिल रहा है एंड देयर जर्नी इज बिंग नोटेड डाउन. तो वो yeah. बहुत बड़ी बात है. नाउ देयर विल बी अदर एंटरप्रेन्योर्स विल बी थिंकिंग लाइक कि हाँ मुझे नीलाक्षी को अप्रोच करना चाहिए. दैट प्लीज Definitely. आई वांट All टू up for टॉक it. अबाउट माय बिजनेस और मेरे को भी मार्केटिंग चाहिए तो प्लीज नीलाक्षी मैम आप दे दीजिए. तो शी इज लाइक ओके Definitely. वेलकम. Yeah. Anyone राइट. can contact me. Businesses of India पे, Businesses of Lucknow पे, my personal email ID or the या account. Nilakshi AG is the account. किसी पे भी या contact कर लो. Like I'm all up for it. या गाइस कुछ सोचो मत, कुछ लगता है तो डायरेक्टली टेक्स्ट हर. शी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट सम और द अदर वे. Thank you so much, Yeah. Nilakshi. And it was really an amazing talk. And I had like ऐसे बहुत मजा आया आज के दिन क्योंकि हम लोग ये दिन ज्यादा अच्छे से मनाते नहीं थे क्योंकि हमको पता भी नहीं था Yeah. कि हम लोग इस I know. कैटेगरी में आते हैं. So I today talk we to so many actually people made a and day they out of talk. it. Yeah, and I Yeah. talked to a lot of people. We'll be sharing a video also of few entrepreneurs, Yeah. and they were shocked. अच्छा आज World Entrepreneurs Day. Okay, पता ही नहीं था. So That's all. yeah, And but yeah, good. always feel proud of yourself यार नीलाक्षी. You're doing really an amazing job. और इस वजह से तो पता तो चलेगा कि कितने टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, उनका स्ट्रैटेजीज क्या क्या है और इंडिया कहाँ तक जा सकता है बेसिकली. इट्स रियली अमेजिंग. I love your Yeah, work. that's I love your strategies today. Like you guys thank are you. pretty much awesome. Thanks a lot. The goal is to keep expanding. The goal is to cover more cities and Yeah. always bringing more people in the limelight because Yeah. we need to know what people are going through and the relatable factor is always there. Yeah. When you listen to other people, you feel कि हाँ मेरी परेशानियां शायद काफी छोटी हैं. People have much bigger Yeah. My goodness. struggles in That's life. like happy realization kind of point. Like, okay, dude, keep your Yeah. mouth shut. Yeah, keep your mouth shut and even also like you gives you inspiration to keep going. Ki Yeah, like, nothing you're doing is small. So yeah, whoever is in whichever profession, job, business, जिसमें भी हो, whatever you're doing is obviously counting. So keep yeah. going. Wow. Yeah, I love the title, but बात करने से ही बात बनती है. I just loved it. Thank definitely. you so I much for follow it this. every day. Thanks a Wow. lot for having me because बहुत ही amazing था. There were so many things which I had never recollected because you keep going, you never reflect back. So I make Yeah. people do that today for the first time. I also felt कि अच्छा, this is what this is all that Nice. I've done. So that's a very nice feeling. Awesome. I hope that you like this session. I hope you liked my questions. कुछ अजीब या गलत नहीं हुआ है in the Definitely. journey of yours. And No, I am not at sure all. like काफी लोगों ने तुम्हारा stories अभी सुना है और अभी वो आगे जाके देखेंगे वीडियो पोस्ट होने के बाद. So if there is बिल्कुल. any help you guys need, तो Nilakshi is there and also I am there. तो हम लोग guide कर सकते हैं and let's have a chit chat again. Thank you Definitely. so much, Nilakshi, And and I all the hope. best. Yeah, thank you so much. All the best to you for this awesome journey that you've started, and I'm sure you're going to Yeah. have a lot of fun. Yeah, let's have like a meetup or something. If I'm in Lucknow or maybe you come on this Definitely, side, तो हम लोग बिल्कुल definitely. बात करते एक दूसरे का इंटरव्यू वहीं ले लेंगे on spot. Sure. Let's have fun. Thank you so much, Meenakshi. See you next time.
Yes. Bye bye. 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 Take care. Bye. Yeah, you too. Take care. Bye. Oh my God, I just love this conversation. Guys, again, happy World Entrepreneurs Day. And I am sure कोई ना कोई कुछ ना कुछ आज के टाइम पे कर ही रहा है. मैं पूरा विशेष दे देती हूँ तुम लोगों को कि प्लीज कीप गोइंग, कीप डूइंग इट. एंड गलतियां भी होनी चाहिए, जरूरी है. जैसे अगर आप ये वीडियो देखोगे अभी पोस्ट होने के बाद, you'll come to know what Nilakshi has to put here. See, until and unless you talk, there are not things happening for you. You are obviously going to feel yourself like, yeah, I'm stuck somewhere. Don't make yourself feel like that. Please, कुछ questions है, लोगों से बात करो, आपस में थोड़ा सा discussions होने जरूरी है. And until and unless you do, थोड़ा सा mind open भी नहीं हो पाता है, तो please do it. Keep on going and thank you so much for being there guys. मुझे काफी अच्छा लगा कि आज काफी टाइम तक के आप लोग थे और आपने हमारा कॉन्वर्सेशन सुना, नीलाक्षी का जर्नी सुना. एंड आई विल बी कमिंग बैक विद दिस अमेजिंग पर्सन जस्ट लाइक दैट. और हम लोग अगेन विल हैव एन अमेजिंग प्रोडक्टिव discussion here and I hope you'll love that too. So guys, see you next time. Bye. Namaste.